Welcome back to part 2 of LCM and HCF. In the last class, we studied about 4 prime numbers. Now, let's do one question. So, the question is, what is the least number exactly divisible by 6, 9, 12, and 15? So, whenever you see this word least, think of LCM. So, here we are supposed to find LCM of these numbers least possible way. तो अगर हम सवाल जल्दी करना चाहते हैं, so what we'll do is options यूज करेंगे. तो सबसे छोटा जो ऑप्शन होगा उसको उठा के चेक करेंगे whether वो LCM है या नहीं. ठीक है, सबसे छोटा यहाँ पे 180 है. ठीक है, तो इन सब से डिविजिबल है, देन दिस इज द LCM. 6 से है यस, 9 से है यस, 12 यस, 50 यस. सो यू विल जस्ट टेक इट डायरेक्टली, बट सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं. 6 इज, तो हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अपने प्राइम फैक्टर्स ओपन करके लिखो. ठीक है, सारे नंबर्स को 3 कॉमन आ गया. राइट, फिर सबसे बड़ा नंबर 2 की पावर में क्या है 4. फिर एक 3 और है और 5. दिस इज इट. नाउ मल्टीप्लाई इट, यू गेट दिस वन. राइट, दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी मूव ऑन टू इज, हमें यहाँ पे एलसीएम गिवन है. LCM of A and B is 40. Right? And C is 80. C की value given है. Then what is the LCM of A, B and C? इस चीज में सिंपल तरीका ये है कि जब आपको ऑलरेडी दो नंबर्स का एलसीएम दे रखा है, आप उसको ऐसे मान के चलो कि डायरेक्टली आपको दूसरे कोई नंबर दे दिया है. ठीक है, ए एंड बी का एलसीएम है हमारे पास 40, सी इज 80. तो अगर मान लो कोई दूसरा नंबर भी होता 40 और 18, तो हम उसको नॉर्मली जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे एलसीएम निकालते हैं. ये ए और बी का एलसीएम लेते ही आपने यू हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑल द नंबर्स इन देयर maximum possible values, prime factors are. So you don't need individual values now. A, B, C का LCM निकालने के लिए you just use this values. 40 and 18 का LCM निकालना. ठीक है, तो 40 की पावर में will basically write in the form of what? Prime factors. So 2 into 2 into 2 into 5. That is 2 की power 3 to 5. 18 is what? 3 square into 2. क्या करेंगे एलसीएम में सी वाला क्या मैक्सिमम पावर्स को उठा लेंगे. मतलब 2 की पावर 3 सबसे ज्यादा है, 3 की पावर सबसे ज्यादा है 2 और 5 की पावर. दिस इज एन एलसीएम and this multiplied and get this to be 60. Now I'll just give you one question to solve yourself. Pause the video. So LCM of A and B is 15. LCM of C and D is 25. Find LCM of A, B, C, and D.
Just pause the video and try solve this question. तो बेसिकली इसमें क्या करना है, सी ए और बी का एलसीएम गिवन है, इसको एक एक्स नंबर की तरह से ट्रीट कर लो, सी और डी का एलसीएम जो इसको वाई की तरह ट्रीट कर लो, एक्स और वाई का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो 15 25 का एलसीएम निकालना है, तो 5 स्क्वायर 5 into 3. The LCM will be highest powers of both is it. Now, if A, B, and C are three zero numbers such that ST is such that LCM of A and B is what? B. LCM of B and C is C. Find LCM of A, B and C. हमें A और B का LCM गिवन है, C और B का LCM गिवन है, हमें निकालना है A, B, C. This is your homework question. Try solving. I'll discuss this question with you in next class because I feel like you need time for this question. Okay. Next is one more question. What is the least? What is the smallest perfect square number which is completely divisible by 4, 6, 9, 12. These are individual numbers, okay? And 15. Option 1 है 900, 961, 754 and D 840. सबसे पहले तो हमें एक टेक्निक आनी चाहिए, जब भी हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम, यानी कि हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। कोई भी नंबर है उसकी डिजिट्स को इंडिविजुअली लेके सम कर दिया, जैसे मेरे पास है 53, इसका डिजिटल सम होगा 5 + 3 दैट इज 8। ठीक है, 74, 7 + 4 that is 11, 11 eventually turns out to 1 + 1 that is 2, तो digital sum is 2। ठीक है, तो 9 से जब भी डिविजिबल होगा नंबर, if a number is divisible by 9,
then its digital sum is 9. और यहाँ पे हम सबसे इजी टारगेट उस नंबर को बनाएंगे, बेसिकली डिजिटल सम चेक करेंगे, उसके बाद बाकी सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे अगर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल सम कितना है 9, यहाँ पे 9 + 6 + 1, राइट, दिस इज 7। कैसा है, देखो 9 के साथ जो भी ऐड करोगे, वन मोर थिंग, 9 के साथ जो भी नंबर ऐड करोगे ना वही नंबर वापस आ जाएगा। 9 + 6 करोगे 15 आया, 15 के जिसको ऐड करोगे 1 + 5 दैट गिव्स यू अगेन 6, तो 9 + 6 is 6। तो यहाँ पर हम 6 और 1 को ही डायरेक्ट ऐड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 7, तो 7 यानी कि डिविजिबल नहीं है 9 से। फिर ये 7 + 8 + 4, so 8 + 4 is 12, 12 + 7 is 19, 19, तो ये तो 1 हो गया, ये भी हो गया। 8 + 4 + 1, ये भी हो गया। क्यों, ये 4 होगा, बचा क्या, ये बस ये आंसर, दिस इज इट। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो हम बाकी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सबसे पहली कंडीशन तो हम ये चेक करनी थी। ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। This is again your practice question. You can practice it yourself. And in case you face any problem, let me know in the comment sections. We'll discuss in the next class possible. Okay. क्या लिखा है यहाँ पे? What is the least square number that is divisible by 8, 12 and 20? जब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि लीस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो हम पहले सबसे पहले अपनी यही कंडीशन चेक करेंगे कि वो नंबर एक स्क्वायर होना चाहिए। 36 is a square, 44,000 is a square, is 10,000 a square? No. Is 56 a square? That's how you check. तो पहले ही हम अपने ऑप्शन इस बेसिस पे एलिमिनेट कर देंगे, फिर हम इससे चेक करेंगे कि लीस्ट नंबर से। तो 30, ये तो पहले उड़ गया, 3600 देखो यहाँ पे लीस्ट है, 3600 को चेक कर लेंगे, इज इट डिविजिबल बाय, yes, this is divisible by 12, yes, it is also divisible by 20, simply take it. Okay, that's how you save your time. I was supposed to give this question to you as well, but since I have already explained it, I think well and good. Okay, I think I should start with this. If a positive, this plus with b is positive, okay, integer n is divisible by 3 by 7, then what is the next larger integer divisible by all numbers? इसमें ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक यू शुड ट्राई सॉल्व विदाउट ऑप्शंस फर्स्ट, क्योंकि इट्स अ क्लियर गुड क्वेश्चन। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि एन डिविजिबल है, और हमें ये पता है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
यानी कि सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा दैट इज एलसीएम। तो सबसे छोटा नंबर, अब इस n डिविजिबल है तो सबसे छोटी वैल्यू जो इसमें डाल सकते हैं, राइट, वही तो सबसे नेक्स्ट लार्जर इंटीजर होगा। n प्लस एलसीएम ही तो वो नंबर होगा। एलसीएम निकालो बस, 357 का एलसीएम, सिंस ये ऑलरेडी प्राइमरी द डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम आएगा, राइट, which will be what 105। कैसे आया देखो, 7 into 3 21 21 into 105। यहाँ पे if you don't want to do multiplication, what you can do is you can check the options। ऑप्शंस में भी पूरा कुछ नहीं करना है, just check the unit digits, और यूनिट डिजिट सेम हो जाएंगे then you have to solve। तो फिर डिविजिबिलिटी लगा लो स्टफ। यहाँ पे हमें गिवन है 5 से डिविजिबल होगा तो हम 5 से डिविजिबल वाला ही देखेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा मैंने, तो ये बचेंगे, फिर हम यूनिट डिजिट्स देख लेंगे। तो हमें दिखेगा कि लास्ट में हमारा 7535 इंटू 3 आ रहा है, राइट, तो ये 5 है, यहाँ पे 5 है, ये बच जाएगा। अब बचेंगे बी और सी ऑप्शन, राइट, तो बी एंड सी ऑप्शन में हाउ यू ट्राई, क्योंकि 7 into 5 into 3 है तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, देन दिस इज द आंसर। ओके, क्लास में हम कॉन्सेप्ट से ही सीखेंगे, मोस्टली हम वो सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत अभी क्वेश्चंस में आएंगे, लेट्स सी। ओके, so next question is quite interesting. I would like you pause the video and try solving it by yourself and then look for the solution. So capital N is the smallest 5-digit number which when divided by 2, 2 square, 2 cube, 2 की power 4 and so on, 2 की power n, leaves a remainder 1. What is the value of small n? ये n कौन सा, ये जो 2 की पावर में डाला, ठीक है। Options are 12, 13, 14 and 15. Pause the video and solve it. Okay, now see, हमें गिवन है कि n जो है 5 डिजिट नंबर है which is divisible by these 2 की powers, not divisible but leaves a remainder 2 की पावर n से कट जाएगा, बस एक 1 रह जाएगा, पहली रिक्वेस्ट तो ये है। दूसरा हमें पता है 5 डिजिट नंबर है, और ऐसी 2 की पावर डिटरमाइन करते हैं जो 5 डिजिट्स में। 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32, 64, 128। हाँ, ऐसे करते करते फिर कैन डायरेक्टली रिकॉल की कौन सी पावर बोलती है तो स्किप करके डायरेक्टली चले जाओ उस पर, बट आई जस्ट टेल यू ऑल दीज। हम क्या कर रहे हैं, अभी 2 की पावर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 5 डिजिट नंबर तक रीच कर पाए।
पेपर ध्यान से, इससे अगर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो बेस्ट, तो हमें खुद पता लग जाएगा कि कौन सी बार 5 डिजिट रीच करता है। तो यहाँ पे इसके बाद 5 डिजिट आ जाएगा। दिस इज व्हाट, 2 की पावर 14। नहीं तो बिना ये सब लिखे भी तुम कर सकते हो। कैसे? कि तुम्हारे पास यहाँ तक आ गए हो, ये मोस्टली याद रहता है। 2 की पावर 10 is 1024. So you have to multiply this by some number in tens to reach fifth place. Wait and explain. पहले हम इससे चले जाते तो हमारे पास आ गया 2 की पावर क्या, 2 3 4 5 6 10 14 is a 5 digit number। तो इससे डिविजिबल होगा, इसमें +1 कर दो, आ जाएगा। ठीक है, होती है। तो हमारा आंसर स्मॉल एन की वैल्यू पता नहीं थी, 14 आ जाएगा। अब मैं आई वाज टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस विदाउट राइटिंग ऑल द स्टफ, राइट? So for that, what we'll do is, you know, 2 की पावर 10 is 1024। ये 4 डिजिट है, एक और डिजिट लाने के लिए हमें कुछ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की 10 समथिंग, तो 10 समथिंग क्या होगा, 2 की पावर में होना चाहिए ना। तो मेरे को पता है 8 आता है, 16 आता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है ना, 8000 के आसपास नहीं है। तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 14। ऐसे भी बता सकते हैं। Now, this very interesting question we have. Let's try and solve. What is the sum of smallest number of digits which divides by 15, 18, 42, each case leaves the remainder 8, which is completely divisible by 30. So the question is, what is the sum of smallest digit? Let's say n हमारी digit है smallest, which is divisible by 13, right? Which divides by 15, 18, 42, leaving a remainder of 18 inches. इन सब से डिवाइड हो जाती है, बट 8 रिमाइंडर छोड़ देती है। ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट इट इज डिविजिबल बाय 30। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। LCM of these 3 digits, 5 into 3, 6 into 3, and so on. You can just solve it by yourself, right? You may directly be your 6th. अब अगर हमें माना था कि वो नंबर n है, तो n किस फॉर्म में, मैं गिवन है क्वेश्चन में तीनों से डिवाइड हो जाता है, बस हर केस में कुछ एक जैसे डिवाइड कर देते हैं। तो मान लेते कि वो 630 से डिवाइड होगा, राइट? तो 630 टाइम्स कुछ होगा वो, तो हम उसको के मान लेते हैं। बस हमारा क्या होगा, 8 रिमाइंडर। ये हम रैंडम नंबर है, ये हमें नहीं पता चला है, हमारे पास एक ही फॉर्म होगी और हमें गिवन है 13 से डिविजिबल, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा है। इस 13 से डिवाइड करके देखते हैं, राइट?
63 को 13 से डिवाइड कितना आएगा 62 520 उड़ गया बचा कितना ऐसे तो मैं डिवाइड करूँ 0.04 बचा कितना 6 से मैंने बच गया इसको 13 से डिवाइड किया तो ये कितना बचेगा 6k प्लस 8 ये जो है हमारा 13 से डिवाइड नहीं होगा तो यानी कि इसको डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर है ये अगर इसे डिविजिबल होना है 13 से देन व्हाट वी नीड इज 6k plus 8 should be divisible by 13 तो हम उसमें की वैल्यू डाल के देख लेते हैं 1 डाला अगर के को हमारे पास इसकी वैल्यू भी आएगी 14 डिविजिबल है के को 2 डाला तो क्या वैल्यू आएगी 20 डिविजिबल नहीं है 3 डाला 26 आ गया 14 से डिविजिबल है तो के की वैल्यू आ गई हमारी 3 यानी कि n आ गया हमारा 630 into 3 plus 8 राइट सवाल में पूछा क्या था सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स तो नंबर तो ये है इसका सम निकालना है डिजिट का सम डिजिटल सम नहीं बोला है तो बिल्कुल छोटा नहीं कर देंगे ऑप्शन के हिसाब से लिखना है आंसर को याद है 26 देखो ऑप्शन में है क्या ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है मैंने इसके एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दी थी यहाँ पे so that you can solve it by yourself and see if you learned or not. Let x be the number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves no remainder. The sum of digits of x is 17, 18, 19, 20. यहाँ पे अगर सवाल को ध्यान से पढ़ो तो हमें दिया है 9 से डिविजिबल है एंड आई टोल्ड यू अर्लियर बाय डिजिटल सम कि जो नंबर डिविजिबल होगा 9 से इसका डिजिटल सम 9 है तो डायरेक्टली उसे चेक करके यू कैन सी 18 नंबर बाकी you can use the earlier method to solve this question and do this. Goodbye. I hope you learned well through this video.